हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू सिल्स गिटार क्लास। माय नेम इज रूपम और आज हम सीखेंगे ऑल द मेजर एंड द माइनर कॉर्ड्स। इन दिस लेसन आप स्टेप बाय स्टेप कैसे कॉर्ड्स बजाया जाता है यू विल लर्न। ऑल द मेजर कॉर्ड्स, जितने भी मेजर कॉर्ड्स होते हैं आई विल टीच यू, प्लस ऑल द माइनर कॉर्ड्स, जितने भी माइनर कॉर्ड्स होते हैं वी विल लर्न टुडे विद द डायग्राम एंड द फिंगर पोजीशन। ठीक है, तो ये बहुत इजी होने वाला है, प्लीज चेक टिल द एंड। तो पहले हम सीखते हैं इस गिटार में कितने स्ट्रिंग्स होते हैं। देयर आर हाउ मेनी स्ट्रिंग्स? देयर आर 6 स्ट्रिंग्स इन द गिटार। ओके, इट स्टार्ट्स विद द E स्ट्रिंग, द थिन वन, E स्ट्रिंग, फिर आते B स्ट्रिंग, फिर आपको आता है G स्ट्रिंग, देन द फोर्थ वन इज द D स्ट्रिंग, फिर A स्ट्रिंग और E स्ट्रिंग। So, दो साइड में दो E स्ट्रिंग। दिस इज कॉल्ड द हाई E, दिस इज कॉल्ड द लो E. Okay, now ये छोटे छोटे box, these are called the fret. First fret, second fret, third fret, fourth fret, it goes. First we will come to the C major chord. कैसे बजाओगे? B1, B string first fret, D2, second fret, A3, A string third fret, B1, D2, A3. C major chord. Play it now. Down, 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 down. C minor chord. D string 5th fret, G string 5th fret, B string 4th fret, E string 3rd fret. This becomes C minor chord. Put it like this, it becomes bar chord, C minor chord. 2, 3, 4. Next we go to the D major chord. E string 2nd fret, G string 2nd fret, B string 3rd fret. Now play. D minor chord. E string 1st fret, G string 2nd fret, B string 3rd fret. Let's play. 2, 3, 4. E major chord. G string 1st fret, A string 2nd fret, D string 2nd fret. Let's play. Down, 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 down. E minor chord. A string 2nd fret, D string 2nd fret, A2 and D2. 1, 2, 3, 4. F major chord. First finger bar, full bar. Second finger G string 2nd fret. Then third finger A3, D3. This, or you at least 2 you pulled. Okay, if you do this it becomes F bar chord. 1, 2, 3, 4. F minor chord. No need. So first fret bar, A3, D3. 2, 3, 4. G major chord. E3, E string 3rd fret, ऊपर का E3, A2. 1, 2, 3, 4. G minor chord. You played F minor chord,
2 step, 1, 2, same thing. So 3rd fret, full bar, A5, D5, 2, 3, 4. A major chord, D2, 2nd fret, G2 and B2. 1, 2, 3, 4. A minor chord, B1, D2, G2. 1, 2, 3, 4. B major chord, D4, G4, B4. This finger, E2. Or you can put bar, it becomes bar chord. 1, 2, 3, 4. B minor chord, D4, D string 4th fret, G4, B3, E2. Put it as a bar, 2nd fret, it becomes B minor bar chord. 1, 2, 3, 4. So friends, ये रहा lesson of this. कोई भी और गाना, कोई भी और lesson आपको सीखना है, you can always approach me. Till the next lesson, thank you so much. God bless you.